uh, like I had discussed that day also, and yesterday, in fact. So today we'll be, starting with first of all discussing what linear programming problems are all about, and then we'll talk of the solution procedure. But right now, we'll be talking only of the graphical solution procedure that we'll be learning. Okay. Now, before we begin with, there are a few terms that we need to understand in a linear programming problem and that we need to identify before we start formulating a problem and then solving it further, right? So the very first thing that we need to identify in our problem are what are called as the decision variables. Okay, now as the name itself says, decision variables. So definitely they are variables. That means they are quantities that we need to evaluate or compute or see what can be done about them. Or in other words, these are the quantities on which we need to take decisions. Okay, that's why we call them as decision variables. Okay, say for example, we'll start with a general example and then we'll see how the problem can be formulated. Now, supposing there is a carpenter, okay, and he manufactures two things. Say he manufactures tables and chairs. I'm talking of only two things now. Okay. Now, each table, like one table, fetches him a revenue of say 5 rupees. Okay. And one chair fetches him a revenue of say rupees 7. Supposing it's just a random number that I have taken. Okay. Now he comes to you because he wants to, earn as much as possible. So he comes to you and he asks, okay, tell me how many tables and how many chairs should I make so that my revenue is always maximum. Okay. So he has come to you with a problem and you want to provide him with a solution for that. Now, obviously, what does he want? He wants a decision to be taken on the number of chairs and tables that should be manufactured, that should be produced there. Okay, so that means we have to take decision on number of chairs and number of tables. So they become my decision variables. Okay, so like I'll say, okay, let us assume that we are producing x1 number of chairs and x2 number of tables. So the moment we say we have attached alphabet or variables to it. That's what my algebra taught me, that whatever is unknown, take them as xy and then we'll find their values. So definitely the number of chairs and the number of tables to be produced, they are variables. And since we need to take decision on them, that's why we call them as the decision variables. Okay, so once we have the decision variables with us, the next thing, like I was saying, for a typical LPP, the body has what we call as we need to identify what is the objective of the problem so that we can convert the objective into a mathematical function. And because we are dealing with, we are calling it as a linear programming problem, so obviously this objective function will always be linear in nature. Okay, now the objective here with which he has come to you is that he wants to maximize his profit or maximize his revenue, whatever we are calling it. Okay, so obviously
this is the objective here, that something needs to be maximized. But what needs to be maximized, that needs to be defined in terms of variables first. We need to define that function. So that means the objective function here is, first of all, to identify what is going to be my profit function. Okay. So that means profit function or revenue function, whatever we have been calling, whatever that function is, let's call that as Z. Okay. So my objective here would be to maximize Z, whatever is defined like this. Okay. Now, how do we define it? Like, for example, here, see, every chair, every table was giving him a profit of 5 rupees, and a chair was giving him a profit of 7 rupees. यही बोला था ना मैंने. So if I have these quantities with me, 5 and 7, then how many tables actually am I making now? X2. So if one table is giving me 5 rupees, how many X2 tables will give me? Obviously 5X2. And if one chair is giving me a revenue of 7 rupees, definitely X1 number of chairs will give me a revenue of 7X1. So my total revenue function will now become 7X1 plus 5X2. Okay, now this becomes my revenue function or profit function or whatever we were calling it. Okay, and my objective now is to maximize Z, which is 7X1 plus 5X2. Now again, if you see, this function is linear in nature. I have two variables, X1 and X2. Okay, so obviously 7X1 plus 5X2 will always geometrically will give me a straight line because it's a linear function in X1 and X2. Okay, now as far as the objective is concerned, it's fine. Okay, now if I just get this objective function and if I have nothing else to decide, obviously I can say, okay, let X1 and X2 take any values, and as you increase your X1, X2, and accordingly your revenue function will keep on increasing. But the problem is that things are not so easy, because then he tells me that, now this comes to the next part of the body of the problem. Okay, so he tells me that, see, obviously there are table and chairs. So obviously what is required? Wood is required for that. So wood will govern what we call as the raw materials for that. Okay. Now, supposing he says that one table needs, say, supposing 2 units of wood to make, and one chair needs 1 unit of wood. Okay. So, but then that's fine. That is what we call as the requirement, that what all is needed to make chairs and tables. But then he says that for one week he does not, or for one day, let's talk about day only, that in one day he does not have more than 10 units of wood available to him. That means at the most we can use only 10 units of wood, right? Now, if one table and one chair need 2 and 1 units respectively, so obviously how many chairs are we making? X1. So that means X1 chairs will need how many units of wood? 1 into X1. And how many tables are we making? X2. And if one table needs 2 units of wood, that means X2 number of tables will need 2X2 units of wood, right? Now, X1 plus 2X2 is nothing but the requirement of the raw material. But we know that our requirement cannot exceed 10 units because this is the availability. So basically what we have is
On one hand, we have the requirements. On the other hand, we have the availability of the resources. See, these are the resources that we are talking of. And resources could be in terms of anything. It could be in terms of raw material. It could be even in terms of manpower. Okay. So that means this kind of an equation, see, this is not an equation now. This becomes an inequality. So this kind of an inequality imposes a restriction in the sense that my objective was to maximize this function 7x1 plus 5x2, but this objective is not so straightforward. This objective is to be attained under certain restrictions, under certain constraints that we are working on. Okay, so this is one constraint, and this constraint relates to what? The raw material. The other constraint could be due to the machine time availability. See, every product that we are manufacturing, it they run on certain machines. Okay, and even the machine time has a limited capacity. That means we cannot be running the machine forever we want. Okay, similarly, every table needs some amount of machine time, every chair needs some amount of machine time, and the total availability of machine time is also limited. So that means whatever constraint we define with regard to machine time would be my second constraint. Okay, say let it be, say, could it be 2x1 plus 3x2 less than or equal to 20? Okay, so that means in a way, one chair needed 2 units of machine time and one table needed 3 units of machine time, and they have to be less than or equal to 20. That means I do not have more than 20 units of machine time available to me. Okay, that becomes my second constraint. The third constraint could be the manpower, the labor who are making that, right? So, I mean, that could be that in terms that some amount of manpower, man time, man hour, like how many hours are needed by a particular person, worker on that particular thing. But again, manpower is limited. I cannot ask an employee to work for more than 8 hours a shift. So accordingly, we have these limitations. So the other constraint, the manpower constraint, could have been in terms of x1 plus x2 less than or equal to, say, 18. I mean, these are random numbers that I am taking. Okay, so that means every together table and chairs have to be less than or equal to 18. See, mind you, I'm not writing units anywhere. See, this particular constraint is measured in different units of measurements. This will be indifferent, this will be indifferent, because they are immaterial to us. We don't know. Well, they could be anything. They could be hours, they could be, tons, they could be rupees, they could be anything. So we are not bothered about the units of measurements right now. What we are bothered about are the mathematical equations that are governing them. Okay. Now, these are the 3 restrictions he tells me, and these are the constraints under which he needs to work. Okay. Now, see, that's why we call them, see, this is a very common question asked in any interview. We call them as constraints because I'll be talking of two terms, constraints and restrictions. Okay, there are 2 terms meaning the same, very thin line of difference between them. But mathematically, yes, there is a difference. Constraints are the physical restrictions, in the sense that what the decision maker has told me, that this is his objective and these are the limitations that he has. So those limitations that he is describing are actually the physical limitations that actually physically exist in real life. So that's why we call them as constraints. Now I tell him, okay, is that all or is there anything else? He says, no, from my side, this is all, nothing else. Okay. Then as a mathematician, when I try solving the problem, I realize that my x1 and x2 are variables. So basically, what my problem has become is something like maximize z equal to क्या था हमारा 7x1 plus 5x2. Can anybody repeat it? Otherwise, मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा बार बार. 7x1 plus 5x2.
7x1 plus plus 5x. 5x2. But then subject to the conditions that the constraints have imposed on me, right? What was the first constraint that we write? पहला क्या था? x1 plus 2x2. x1 plus 2x2 less than equals to 10. Okay. x1 plus 2x2 less than or equal to 10. Then 2x1 plus 3x2 less than or equal to 20. And x1 plus x2 plus less than x2 less equals than to or 18. equal to 18. ओके अभी तक तो मेरे पास यही प्रॉब्लम बना, अब मुझे इसको सॉल्व करना है. Now, when I look at this as a mathematical problem, I realize that my x1 and x2 can take on any values. Now, this is a very small problem that I have taken up, and only two variables. Otherwise, they could have been anything. He could have been making a bookshelf also, and the restrictions could also have been increased. Okay. Now, one thing is that, okay, my x1 and x2, since they are variables, they are mathematical equations, they can take on any value. But then I realized that physically they are nothing but number of chairs and number of tables. So as I was explaining yesterday, that means whatever values x1 and x2 take, I do not have to consider those values in which x1 and x2 are negative, because physically they do not have any significance. So that means while solving this problem, what I do is I impose a restriction and I say that my x1 and x2 have to be more than or equal to 0. Because at the most they can be 0, but they cannot be negative. Now, this restriction was not given to me by the decision maker. This I have imposed to reduce my effort of finding a solution for this problem. That is why this is called as what we call it as the non-negativity restrictions. That means we are restricting our variables to take only the non-negative values. That means when we define the solution procedure, we are in a way ensuring that my variables will never be negative. So these are the restrictions that we have imposed while solving. That's why they are called as restrictions, whereas physical limitations are called as constraints, because these are actually the limitations under which the decision maker is working. Okay, and these are the limitations that we have imposed in order to simplify the procedure of finding a solution. That's why we call them as restrictions and we call these as constraints. Is this clear? Okay, now once we have this, that means we have a problem in which basically we have an objective function. So this was since with regard to any two variables or three variables. It could have been the problem was that he wanted to maximize his revenue. His problem could have been to minimize his cost of production. So that means basically a typical linear programming problem will either maximize or minimize an objective function, which will be something like this, where we write it as C1x1 plus C2x2 plus Cnxn. If I have how many variables? N number of variables with me. And C1, C2, Cn are the per unit revenue if we are maximizing, or per unit cost if we are minimizing a given function. So this is how a typical objective function will look like. Subject to, now we have the set of constraints. And constraints are something like, we write them in general, we write them as A11 X1. I'll tell you what they actually are. Plus A1 and Xn less than or equal to B1. So basically A11 stands for, say, or in general, A11 would stand for the per unit requirement of the first resource to the first decision making variable. Okay. Similarly, A12 stands for the availability or the requirement of the first resource for the second decision making variable.
and similarly an. And what is b1? b1 is the availability of the first resource. See, if you remember, हमारी जो first equation बनी थी for constraints, it was with regard to the resources. सबसे पहले क्या था? Raw material. Okay, so if I say A11 is the per unit requirement of the raw material for table, per unit requirement of the raw material for chair, per unit requirement of the raw material for, say, bookshelf. And this is what? The total availability of the raw material. Okay. Similarly, the second constraint will have A21x1 plus A22x2 plus A2n xn less than or equal to B2. So the second constraint refers to the second resource, and so on and so forth. I have AM1x1 plus AM2x2 plus AMnxn less than or equal to Bm if I have m number of resources, okay, and n number of decision variables. And obviously, last of all, so they all refer to what we call as constraints. And lastly, what do I want? All my decision variables to be non-negative, more than or equal to 0. So they refer to what we call as non-negativity restrictions. Okay, so this is how a typical LPP looks like, right? With m number of constraints and n number of decision variables. Okay, now the problem is to solve it. To solve, and not just solve, but also to get a solution that in a way meets my objective also. Okay, so when we are solving it, we are actually looking at, in a way, when we say solve, what are we doing? We are actually finding the values of these variables x1, x2, xn, such that what happens? Such that the constraints are satisfied, the non-negativity restrictions are met, and my objective is also met. So there are three things here. Okay. Now, if you just look at constraints, what are they? They are system. How many of them are there? Like in general, there are m of them. Okay. So in a way, when we are finding x1, x2, xn, we are finding in such a manner that they satisfy the system of inequalities. यही हो रहा है ना कि हमारे पास inequalities हैं, equations नहीं है, we have inequalities. So in fact, any solution that satisfies the system of inequalities is called as a feasible solution, क्योंकि वो तो feasible हो गई. ठीक है? In fact, any solution that satisfies the non-negativity restrictions also is called as a, अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं, forget it. Basic की अभी बात नहीं करते. Any solution that satisfies the constraints as well as the non-negativity restrictions, okay, that is called as a feasible solution. Okay. In fact, we have another thing which we call as the basic feasible solution. I will not go into the details of this right away. When we solve the problems, then I'll explain one by one. कैसे अभी बताती हूँ. And any basic feasible solution that satisfies, that optimizes, that meets your objective function is called as an optimal basic feasible solution. Now, let's talk of feasible solution first. Okay, now supposing you have, go back to your system of equations. अभी inequalities को भूल जाओ. जब हमने matrices पढ़े थे, system of equations पढ़ी. Supposing you have
system of equations. I'm talking of equations right away. Okay, system of equations in you have where you have 5 variables, okay, and 3 equations, right? अब इसका solution कैसे निकालते हो? You have 5 variables and 3 equations. कैसे निकालते हो इसका solution? मैम अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 5 वेरिएबल्स और 3 इक्वेशंस है तो हम ए एक्स इज इक्वल्स टू बी करके हम एक्स निकाल सकते हैं. नहीं वही तो मैं पूछ रही हूँ, कैसा solution आएगा इसका? मैम अच्छा. लीनियरली डिपेंडेंट. हाँ. लीनियरली डिपेंडेंट मतलब लीनियरली मतलब मैम उनमें डिपेंडेंट से कोई 2 वेरिएबल ऐसे होंगे जो किसी मतलब किन्हीं दो जो ऊपर वाले उनमें डिपेंड कर रहे हैं. डिपेंड करेगा. और जो 2 वेरिएबल्स ऐसे होंगे उनको हम क्या करते हैं वैसे नॉर्मली? उनको कोई वैल्यू देते हैं या क्या, कैसे करते हो? हम उनको उसी टर्म में लाते हैं. जैसे अगर मेरे x3 अगर x1 x2 किसी टर्म 2 वेरिएबल्स टर्म में आ रही है, हम उसी टर्म में उसको लिखते हैं फिर. उसी की टर्म्स में लिखते हैं फिर. हाँ. अब वो कौन से 2 वेरिएबल्स होंगे? चलो मान लो मेरे पास है मैंने वेरिएबल्स कह लिए x1 x2 x3 x4 x5. अब कौन से 2 वेरिएबल्स हैं? अब क्या करते हो तुम नॉर्मली? से सपोजिंग मैंने x4 x5 ले लिए तो हम क्या करेंगे? x4 को k पुट किया, x5 को l पुट किया, यही किया ना? और x1 x2 x3 इस k और l की टर्म्स में आ गए. ऐसे ही करते हैं ना? या कुछ और यस करते हो? मैम. यस मैम. यही करते हैं ना? तो अब ये जरूरी है कि सिर्फ x4 और x5 को ही हम k और l पुट कर सकते हैं? Could it not have been x1 x2? Could it not have मैम been? हो सकता है. मैम मेन हम पाइवेट कॉलम्स देख लेंगे और मैम उसी समय पता चल जाएगा कि वो x1 x2 होंगे या फिर x4 x5. That is a procedure to identify. ठीक है. अब जिनको हमने जब अब वेक्टर स्पेसेस पे आ जाओ. अब जिनको हमने 0 पुट कर दिया, इनको कोई नाम दिया था? इसमें से अच्छा चलो इनमें से फिर हम क्या अच्छा लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हो जब, तो बेसिस डिफाइन करते हो ना वेक्टर स्पेसेस में? यस मैम. यस मैम. ठीक है भाई. तुम क्या बोलते हो कि एक इक्वेशन जो है मतलब एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? हम नॉर्मली तो यही कहते हैं ना, जब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा. लेकिन डिटरमिनेंट तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकल सकता है कि नहीं? तो एक अगर मैं कह रही हूं मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं और 5 वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब बेसिकली मेरे पास तो 3x5 मैट्रिक्स हो गया ना जब मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगी. यस मैम. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें से एट द मोस्ट 3 कॉलम्स ही तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. यस मैम. बाकी 2 लीनियरली डिपेंडेंट होंगे. यस मैम. यही कह रहे हो ना तुम? पाइवेट कॉलम्स बना लेंगे तो पाइवेट कॉलम्स 3 ही तो यस हमारे मैम. हैं, है ना? बाकी 2 हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, या उनको हम नॉन पाइवेट बोल देते हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इन 5 में से कोई से भी 3 हमारे जो पाइवेट बनेंगे, इट कुड बी x1 x2 x3, इट कुड बी x2 x3 x4, इट कुड बी एनी 3 ऑफ दीज 5. ठीक है ना? तो बेसिकली ऐसे तो हमारे पास कितनी सॉल्यूशंस आ गई? 5c3 या 5c. हमें अगर 2 नॉन बेसिक बनाने हैं तो बेसिकली 5c2. हम कोई से भी 2 चूज कर सकते हैं ना कि किनको k और l पुट करें. तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल? ऑब्वियसली 5c2. तो इतने सारे आ गए. तो ये जो आए हमारे पास ये सारे कॉम्बिनेशंस, they will not only be feasible but they will also be basic feasible in the sense
कि वो सारी सॉल्यूशंस which are possible, I mean, which probably will give us an optimal solution, they are your basic feasible solution. But सारी की सारी तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगी, उनमें से कोई एक करेगी. तो जो एक करेगी दैट विल बी योर ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. बेसिक फिजिबल का मतलब कि हमारे पास वो सारी सॉल्यूशंस, ये सारे कॉम्बिनेशंस, ठीक है, जिसमें हमारा क्या हो रहा है, फिजिबिलिटी भी वॉयलेट नहीं हो रही, मतलब हमारी नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस भी सेटिस्फाइड है. मतलब अब देखो, ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती थी ना कि हमने सपोजिंग सारी ऑप्शंस ली, ठीक है, और ऐसा हुआ कि जब हमने x4 x मतलब जब हमने x1 x2 x3 को बेसिक मान लिया, मतलब x1 x2 x3 कॉलम्स को पाइवट मान लिया, x4 x5 हमारे लीनियरली डिपेंडेंट नॉन बेसिक हो गए, तो ये हमारे, जब हमने x1 x2 x3 को पाइवट मान लिया, तो इसका मतलब x1 x2 x3 ने हमारे उस वेक्टर स्पेस का बेसिस डिफाइन कर दिया ना, ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है. लेकिन जब हमने इनको सॉल्व करा इस तरह से, तो अल्टीमेटली एक सोल्यूशन आया कि हमारे पास कोई एक वेरिएबल नेगेटिव आ गया. सी x1 x2 x3 को पाइवट माना, मतलब x1 x2 x3 को नॉन जीरो से हम k और l पुट करते हैं. इसमें सबसे आसान तरीका होता है किसी को भी दो को जीरो पुट कर दो. सपोजिंग मैंने x4 को जीरो पुट करा, x5 को जीरो पुट कर दिया, ठीक है, दो वेरिएबल्स मैंने जीरो मान लिए, तो मेरे पास सारी सॉल्यूशंस किन की टर्म्स में आ गई, x1 x2 और x3 की सॉल्यूशन आ गई हमारे पास, क्योंकि मेरे पास अब तीन इक्वेशंस तो तीन ही थी, अब वेरिएबल्स भी तीन ही रह गए. क्यों? क्योंकि मैंने x4 x5 को भी जीरो पुट कर दिया, ठीक है. अब सपोजिंग मैंने जैसे ये पुट किया, तो मेरे पास x1 आ गया 1, x2 आ गया 2 और x3 आ गया 5. सपोजिंग कोई भी था मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उनको मैंने ऐसे करा, आई सेड फाइन, दैट मींस सॉल्यूशन आया. इसका मतलब क्या हुआ, ये फिजिबल सॉल्यूशन भी है, ठीक है. और क्योंकि ये मैंने दो वेरिएबल्स को जीरो पुट करके निकाला, इसलिए ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी कहलाएगा. एक और ऑप्शन भी थी कि मैंने x4 x5 की जगह x1 और x2 को जीरो पुट कर दिया, ये भी तो फिजिबिलिटी देगा, ये भी तो सॉल्यूशन देगा. इसका मतलब अब मेरे पाइवट कॉलम्स कौन से हो गए, x3 x4 x5. तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैंने सॉल्यूशन निकाली, तो आई x3 2, x4 -2 एंड x5 7. अब ये सॉल्यूशन तो है, मैथमेटिकली दिस इज अ सॉल्यूशन, बट because my x4 has turned out to be -2, that means this solution is of no use to a linear programming problem. क्यों? क्योंकि उसमें तो नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए थी. तो इसका मतलब कोई भी वेरिएबल मेरा नेगेटिव वैल्यू तो ले ही नहीं सकता. इसका मतलब दिस विल नॉट बी अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. इट इज अ सॉल्यूशन बट इट इज नॉट अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि ये फिजिबिलिटी वॉयलेट कर रहा है. इट इज अ बेसिक सॉल्यूशन बट नॉट अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. ये x3 x4 x5 के कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, बेसिक बेसिस है, बट it is violating the non-negativity restrictions. So every basic solution may or may not be a basic feasible solution. But if you have a basic feasible solution, that will always be a basic solution. अब ऐसे हमने जितने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस हम निकाल सकते थे हमने निकाले, और उसमें से हर एक सॉल्यूशन को देखा अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सेटिस्फाई करके, जिस सॉल्यूशन ने मैक्सिमम z दिया वो हमारा ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाया, ठीक है. अभी हम एल्जेब्राइकली हम इस पे अभी नहीं जाएंगे. जब हम एल्जेब्राइकली करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड डिफाइन करेंगे, देन वील सी कि पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, कैसे कैसे हमारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, ठीक है. बट since we are concentrating on say graphical method first, so I will just explain graphically इसका क्या मतलब होगा, basic solutions और basic feasible solutions कौन से होंगे. मैम हाँ मैम जो हमारे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस है तो हम बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ बट लेकिन हाँ, क्योंकि वो अगर हम, जैसे आपने कहा कि उसमें सिर्फ ये होना चाहिए कि वो नॉन नेगेटिविटी जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हाँ सेटिस्फाई करे. हाँ तो और मैं ऑप्टिमल, मैम ऑप्टिमल जो तब होगा जब हमारा ऑब्जेक्टिव जो है उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मैक्सिमाइज हाँ मिनिमम जो भी दे रखा है तो हम उसे हाँ ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल हाँ सॉल्यूशन कहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल.
तो इसीलिए हमारे पास देखो, अब फिजिबल सॉल्यूशंस क्या हुए, फिजिबल सॉल्यूशन तो बहुत इनफाइनाइटली ऑल मेनी हुए। सॉल्यूशंस हो जाएंगे, जो भी हाँ, सॉल्यूशन होंगे और उसके। पॉसिबल, हम के हम्म। एल को जो मर्जी वैल्यू देते रहे और हमारे पास वो सोल्यूशन आता रहेगा। तो फिजिबल सोल्यूशन तो इनफाइनाइटली मेनी है। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फिर भी लिमिटेड हो गए, क्योंकि हमने 0 0 निकाल के बाकियों की वैल्यू निकाल दी। लेकिन ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल तो एक ही रहेगा, जरूर, मतलब शायद से हम ये मानकर हाँ चलते हैं। हो हाँ, सकता हो है इससे सकता है। ज्यादा भी हो, दैट यस मैम। डिपेंड्स अपॉन अ टिपिकल प्रॉब्लम। बट एज ऑफ नाउ तो हम यही मानकर चल रहे हैं ना कि ऑप्टिमल, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास इतना भंडार था पॉसिबल सॉल्यूशंस का, उनको एक तरह से फिल्टर लगा लगा के हमने उसको इतना नैरो कर लिया कि हमारे पास अल्टीमेटली एक हैंडफुल ऑफ सॉल्यूशंस ही रह गई, जिनको हमको टेस्ट करना है कि ये ऑप्टिमल वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की देंगे या नहीं देंगे। ओके, सो दे विल बी जस्ट वेरी लिमिटेड इन नंबर। अब ठीक है, इज दिस क्लियर? यस मैम। ओके, मैम हाँ जी बोलो। मैम फिजिबल एंड बेसिक फिजिबल में डिफरेंस क्या है, वो समझ नहीं आया। फीजिबल तो वो वे ना, फीजिबल जैसे तुम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जब सॉल्व करते हो, 3 इक्वेशंस 5 वेरिएबल्स, कितनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगी उस इक्वेशन की? अभी बेसिस की बात मत करो, सिर्फ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करो। चलो, 3 इक्वेशंस 4 वेरिएबल, 5 पे भी मत जाओ, अभी 4 पे ही जाओ। मैम बहुत सारे हो सकते हैं सोल्यूशन। बहुत सारे हो सकते हैं ना, वो तो हो गए इनफाइनाइटली मेनी। क्यों बहुत सारे हो सकते हैं? तुमने कहा हमने एक वेरिएबल को हम के पुट कर देते हैं और बाकी तीनों वेरिएबल्स को उन्हीं के की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, यही करते हैं ना। तो अब के को तो तुम जो मर्जी वैल्यू देते रहो, तुम्हारे पास बाकी वेरिएबल्स की भी वैल्यू आती रहेगी। तो ये तो हो गए फीजिबल, ठीक है। यस मैम। बेसिक फीजिबल वो हुए जो नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो तो कम हो गए ना, यस मैम। ठीक है। और ऑप्टिमल बेसिक तो वो हुए जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, वो ओके एक मैम। ही होगा, ठीक है। यस मैम। अब जब हम इसको, नाउ 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 दैट मीन्स वंस वी नो दैट वी हैव अ प्रॉब्लम विद अस, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जिसमें हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? चलो अभी मैक्सिमाइजेशन ही लेकर चलते हैं। मैक्सिमाइज z इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, एंड कॉन्स्ट्रेंट्स हैं हमारे पास बहुत सारे, और हमारे पास नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि x1 x2 xn इज मोर देन और इक्वल टू 0। अब हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सोल्यूशन प्रोसीजर, अभी तक हमने जो भी बात करी, चाहे हम मेट्रिसेस में लेके आए, चाहे हमने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की बात करी, वो हमने बात करी इक्वेशंस को लेके, ठीक है। बट हमारे पास प्रॉब्लम में इक्वेशंस तो नहीं है, हमारे पास इनइक्वालिटीज है। दैट मीन्स हमको इनको सॉल्व करने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, सिर्फ सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमको अब एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को का जो सोल्यूशन प्रोसीजर है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। ओके, तो एज आई सेड, फर्स्टली we will be discussing the graphical method of solving an LPP, ठीक है। Now since it's graphical, that means we'll be plotting it, so we'll be restricting ourselves to only 2 variables। कांस्टेंट जितने मर्जी हो, बट हमारे वेरिएबल्स हमारे पास सिर्फ 2 ही होंगे। Why 2? Because we are going to plot them. Okay, so when we plot them, we'll assume that one axis is for my variable number 1 and the other axis is for my variable number 2, which is x2, ठीक है। Now as such, my x1 and x2 should represent the whole real plane, right? But since I have the non-negativity restrictions with me, that means, see what happens when x1 is 0.
that means you are on the x2 axis. ठीक है? What Yes, happens ma'am. when x2 is 0? That means you are on the x1 axis. ठीक है? Yes, ma'am. And what happens when both of them are more than 0? That means you are Ma'am, in first quadrant. the first quadrant. ठीक है? So that means I don't need this quadrant, I don't need this quadrant, I don't need this quadrant. So when we are graphically solving a linear programming problem, we are actually concentrating only on the first quadrant. At the most, कहाँ पे? Origin, minimum, 0, 0. यही है ना? उसके बाद इस डायरेक्शन में x1 इंक्रीज कर रहा है, इस डायरेक्शन में x2 इंक्रीज कर रहा है. ठीक है? Because they are the positive directions of both the variables. Okay. So that means when we start solving the problems graphically, we'll be just in the first quadrant. ठीक है? Then secondly, how to identify the region. अब first quadrant भी तो अपने में बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना? तो उसके लिए that all depends कि हमारी problem है क्या जिसको हम solve करने वाले हैं. ठीक है? Say supposing, shall we take some problem and then work on? Say supposing you have this problem where we have to, मैं बहुत छोटा वाला problem ले रही हूँ. Let's solve this. Maximize z equal to 15x1 plus 10x2 subject to the constraints. इसको ले लो 2x1 plus 3x2 less than or equal to say 180 or say x1 less than or equal to 60, x2 less than or equal to 40. छोटी problems नहीं है. x1, x2 more than or equal to 0. Okay. Supposing we have to solve this. अभी छोटा ही problem दिया है हमने. We have to solve this linear programming problem. ठीक है? अब x1, x2 कुछ भी हो सकते हैं. Not bothered. Problem मैंने बना लिया. Real life situation दी गई थी. उसको हमने convert कर लिया and we end up with this problem. Okay. So obviously our objective is to maximize. So we have to find those values of x1 and x2 that give us the maximum value of z. ठीक है ना? And these are the constraints and these are my non-negativity restrictions, right? Now see, I have two variables, x1, x2, and how many equations do I have? 3 equations I have, right? Not equations, we have 3 inequalities here. Up, see, what happens is when we are evaluating algebraically, we solve equations. ठीक है? अब equations का मतलब क्या हुआ? अगर मैं say let's look at the first constraint. क्या है ये? 2x1 plus 3x2 less than or equal to 180. Now what does 2x1 plus 3x2 equal to 180 represent? You have two variables. So obviously it is like ax plus by equal to c. उसी तरह की equation है ये. And what does it represent? It represents a straight line. ठीक है? Now, if I look at values x1 and x2 equal to 180, 2x1 such that 2x1 plus 3x2 equal to 180. अब ऐसे तो बहुत सारी values आ जाएंगी. I can have infinitely many options for x1 and x2 which satisfy this relation. हाँ या ना? ठीक है ना? Because this is a straight line. But I am not interested in the straight line. I am interested in this, less than or equal to. So basically what I am interested in is equality जहां तक रही वो तो straight line बन गई, ठीक है? But that means I am interested in not only on those points which lie on this straight line, but also on those points which satisfy this relation as well. तो अब ये तो पहले से भी ज्यादा बढ़ गए पॉइंट्स. भाई x1, x2 में मतलब मैं कोई से भी कितने सारे पॉइंट्स ऐसे निकाल सकते हो जिनको हम 2x1 plus 3x2 will give me 180.
but not just equal to 180. I'm also interested in those set of x1 and x2 such that 2x1 plus 3x2 is also less than 180. अब less than 180 में तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? I'll get such a big scatter of points in my x1 x2 plane. So basically वो हमें जब हम less than or equal to की बात कर रहे हैं तो उसने हमें एक क्या दे दिया? एक region, not just a straight line. It gives me a region. Okay, so that's how we do. तुमने क्लास 12 में भी ऐसे ही सीखा है ना इसको सॉल्व करने का तरीका. What do? मैम जो लाइन, जो हम लाइन बनेगी, आती है, हाँ उसके नीचे वाला हिस्सा है बॉटम की, जो क्योंकि लेस देन है तो वो पार्ट भी रीजन हमारे कवर हो जाएगा. जरूरी नहीं इस तरह से, अभी मैं बताती हूँ. सो व्हाट वील डू इज, लेट्स सी, दिस is my x1, this is my x2. Let's plot, say supposing 10 20 30 40 50 60 80 10 30 40. Supposing these are my lines, right? मैं randomly ले लिया मैंने, ठीक है. And similarly here also. And so on and so forth. And this is my origin, right? Now, what was the first equation? 2x1 plus 3x2 equal to 180. तो अब क्या करते हो तुम? सब ऐसे ही सॉल्व करते हो ना? I need 2 points to plot this line. तो एक बारी x1 को 0 पुट कर दिया, एक बारी x2 को 0 पुट कर दिया. So when x1 is 0, your x2 is 60. And when x2 is 0, your x1 is 90. तो हमें ये थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा. एक मिनट. This point is 80 and so this point is 90. So my points are 0, 60. 0, 60 means this point, right? And then 90, 0. That means this point, right? So basically, this my first constraint is going to be a line joining these 2 points. Okay, na? This becomes now see, this is my line number 1, constraint number 1, right? Now, but I was not just interested in the points such that they are equal to 180, right? What do I want? I want a region such that 2x1 plus 3x2 is less than or equal to 180. So what we do is we look at 0, 0. इसको हमेशा ऐसे ही करना. Look at 0, 0. If the origin satisfies your inequality, that means origin lies in your required region. Otherwise, the region is opposite to it. Basically, Yes, किया क्या है, ये जो हमारा first constraint था, इस straight line ने हमारे x1, x2 plane को 2 halves में divide कर दिया, right? Now, अभी हम सिर्फ 2 dimension में है. जैसे ही हम higher dimension में जाएंगे, तो बेसिकली जो भी हमारा कॉन्स्ट्रेंट डिफाइन करेगा, जो भी इक्वेशन होगी, वो हमारे को हाइपर प्लेन्स देगा. तो उसकी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? अभी यही देखो. बट अभी हमने क्या करा, 0, 0 को पुट किया इधर. सो योर लेफ्ट हैंड साइड इज 2 into 0 plus 3 into 0, which is 0, and 0 is less than 180. That means 0, 0 lies in your required region. Okay, so basically this whole region satisfies your first constraint. ठीक है? अब बताओ इस रीजन में कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइटली मेनी. ये सारे के सारे फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं. अभी हम सेकंड पे नहीं आए थे, ठीक है? नाउ व्हाट इज द सेकंड कॉन्स्ट्रेंट? सेकंड कॉन्स्ट्रेंट वाज क्या था, एक बारी बताओ. x1 less than equals to 60. x1 less than or equal to 60. ठीक है? तो अब हमने क्या करा? To plot this, what do? We see the line x1 equal to 60. अब x1 equal to 60 कैसी लाइन बनेगी? मैम वर्टिकल लाइन.
vertical line, right? Passing through 60. Yes, So ma'am. that means you have something like this. Yes, ma'am. ठीक है ना? So this becomes your second constraint, right? Now we want to see the feasible region. अब फिर wait करो. C हम 0 जीरो पुट करेंगे. 0 0 को identify करो. Does 0 0 lie on your in your region? Satisfy the constraint? Yes. Yes, ma'am. So that means now again जो Tell हमारा, side region. हाँ, अब देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला हमारे को अब 0 0 इसका मतलब ये वाला रीजन ही तो आया ना हमारा, ये सारा. कहने को तो ये भी था, बट हमें कैसा रीजन चाहिए? कहने को तो ये वाला रीजन भी है, बट हमें कैसा रीजन चाहिए जो फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉन्स्ट्रेंट्स को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे. तो अब वो हमारे पास यही रह गया, ये भी खत्म हो गया. ठीक है. सिमिलरली व्हाट वाज द थर्ड कॉन्स्ट्रेंट? x2 Less than equals to 40. x2 लेस देन और इक्वल टू 40. तो फिर हम वही करेंगे, क्या लाइन प्लॉट करेंगे? x2 तो इक्वल टू vertical. 40 ना, x2 सॉरी, हाँ, इक्वल टू हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे 40 के क्रॉस. हॉरिजॉन्टल पासिंग थ्रू 40. 40. ठीक है ना? तो एक तरह से ये लाइन आ गई हमारे पास. दिस इज योर थर्ड कॉन्स्ट्रेंट. ठीक है. अब 0 0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो Yes, ma'am. बेसिकली अब हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास जो रीजन था वो तो और छोटा हो गया. ये बस यही रह गया ना, बाकी तो सब बाहर हो गए, फट गए, क्योंकि हमको तीनों कॉन्स्ट्रेंट साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड चाहिए. ठीक है. तो अगर एक तरह से जो हमारे पास बना, ये क्या बन गया? अगर मैं इसको नाम दूं O, इस पॉइंट को दूं A, इस पॉइंट को दूं B, C और D. तो एक तरह से ये हमारे पास कोई पॉलीहेड्रन टाइप बन गया ना, ये रीजन. ठीक है. राइट. और ये जो आया हमारा, ये क्या कराएगा? ये हमारा पूरा फीजिबल रीजन है. फीजिबल रीजन मतलब इस पूरे रीजन में से हम कोई भी पॉइंट ले ले, x1 x2, it would be such that it would satisfy all the three constraints as well as the non-negativity restriction. तो इस पूरे उसमें जो भी सोल्यूशन हमारे पास निकलेगा, ठीक है, वो कैसा सोल्यूशन होगा? दैट विल बी अ फीजिबल सोल्यूशन. माइंड यू, दैट विल नॉट इवन बी बेसिक. ठीक है. तो अब बेसिक सोल्यूशन हमें अगर ढूंढना है, अभी हम पूरी थियोरम्स में नहीं जा रहे, तो actually there is a result which says that the extreme points of this feasible region, ठीक है, they correspond to basic feasible solutions. हमेशा होगा ऐसे. इसके हम जब हम सिंप्लेक्स मेथड करेंगे तो हम ये प्रूव भी करेंगे that there is a one-to-one correspondence. Okay, now that means graphically हमने ये प्रूव कर दिया कहीं ना कहीं कि ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब जो वर्टिसेस हैं इस फीजिबल रीजन के, ठीक है, हमारा जो बेसिक फीजिबल सोल्यूशन है व्हिच वी कॉल एज द बेसिक फीजिबल सोल्यूशन, that will always exist at the extreme points of this feasible region. तो अब ये तो हमारे पास, अब feasible region में कितने पॉइंट्स थे? इनफाइनाइटली many. लेकिन इस पूरे feasible region के vertices या extreme points कितने हैं? लिमिटेड. कौन कौन से? O, A, B, C और D. बस. ठीक है ना. अब ये तो हमारे पास 5 ही रह गए. तो कहाँ इनफाइनाइटली मैंने यहाँ पे जितना भी जो भी पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट करता वो सब फीजिबल सोल्यूशन था. लेकिन हमें कौन से सोल्यूशंस चाहिए? जो बेसिक फीजिबल भी हो. और वो कितने आ गए हमारे पास? गिनती के 5.
So it's much more easier to handle finite number of solutions. Okay. So what we do is now we evaluate. I mean, अब हमारे पास इन्हीं पांचों points के coordinates है, निकाल सकते हैं. O is nothing but 0, 0. ठीक है. Similarly, A is nothing but 0, 40. B is nothing but 60, 0. ठीक है. Similarly, B is what? The intersection of 1 and 3. Right? Similarly, C is the intersection of 1 and 2. So we can find the coordinates of B, we can find the coordinates of C. So once we have all these points, we can evaluate Z at these points. And whatever value gives us the maximum value of Z, that becomes my optimal basic feasible solution. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया कि नहीं? Now this is